Namaskar everyone. As we have started the chapter 15, framing the constitution. Constitution, the set of rules and laws, and it is mandatory for each and every government just to have one constitution. Accordingly they have to work. कुछ नियम कायदे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा ज़रूरी होते हैं किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है एंड हाउ इट इज़ हैविंग सो मेनी आइडियाज़ विद दैट वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम प्रायर भी स्टडी कर चुके हैं बच्चों. उसमें हमने ये स्टडी किया था कि हाउ इट वॉज स्टार्टेड एंड हाउ द थिंग्स वर गोइंग ऑन and how we got the freedom from the Britishers. So as we have studied in the previous chapter that India was divided in two parts, India and Pakistan. Muhammad Ali Jinnah played a very important role in the distribution theory. Then the elected members of provincial councils, they were the member of Constituent Assembly. Mostly they were of Congress. So you can say Constituent Assembly a one party show. But in Congress also there were various ideologies. Then we studied about the members of Constituent Assembly that Nehru was there, B.N. Roy was there, B.M. Ambedkar was there, Rajendra Prasad was there. So how they all were associated to frame the constitution that we are studying. And today what we are studying, we are just studying about the vision of constitution. Constitution का vision क्या है? So for that we have to see that on 13 December 1946 Nehru brought objective resolution. नेहरू जो थे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए. मतलब these particular things were having some ideals और उन ideals को दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में which was presented by पंडित नेहरू on 13th of December 1946. It defined the ideals of the constitution of free India. क्या किया इसने? आइडियल बताए कि फ्री इंडिया के आइडियल कौन कौन से होंगे, फ्री इंडिया किन किन आइडियल्स को लेकर सर्वाइव करेगा. सो दीज पर्टिकुलर आइडियल्स वर देयर इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. कौन कौन से आइडियल्स थे आपके वो हम अभी देखते हैं, बिकॉज दीज वर द फ्रेमवर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. एक हमारी गाइडलाइंस तैयार कर दी कि whenever we are going to make our constitution we will follow these particular guidelines. So framework was prepared for the same. So in that particular resolution it was said that India is an independent country, independent, free from any external power, or nobody is going to dominate it. It is free. Then it is sovereign, free from internal and external interference. किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ये सवर्न है. रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट विल बी द प्रेसिडेंट. हमारे यहाँ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कौन कहलाते हैं? प्रेसिडेंट कहलाते हैं. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, दैट द हेड ऑफ द स्टेट विल बी प्रेसिडेंट. सो दीज पर्टिकुलर आइडियल्स अलॉन्ग विथ जस्टिस, बिकॉज दीज ऑल टॉपिक्स वी हैव स्टडीड इन क्लास 11, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, एवरीथिंग was the part of the ideals of constitution. कि रिपब्लिक है तो कैसा है, जस्टिस के अलग अलग फेस कौन कौन से हैं, इक्वालिटी के अलग अलग फेस कौन से हैं, और फ्रीडम उसके अलग अलग फेस कौन से हैं. सो इन सच अ मैनर दीज वर द पर्टिकुलर पॉइंट्स विच वर सीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड इट सेफ गार्ड्स. अब ये भी देखा गया कि सिर्फ सेफ गार्ड रहे किन के लिए? माइनॉरिटीज के लिए. Those who are small in number, those who are depressed, those who are just they need the help from the others. They were called the minorities, they were called the SC, STs or the depressed class. उनके लिए कुछ अलग से particular provisions किए जाए या प्लान किया जाए. So in such a way, if we see about the overall view of the constitution, we wanted to make an ideal constitution which can be fruitful for everyone, every part of India. So it is like that. And now what Nehru said कि we have to learn from the West के achievement and failure, उन दोनों से learn करना चाहिए, because Nehru himself got the education from the West. So what he said, if we want to get the education
we want to learn something. So we have to see the achievements and the failures of West. वेस्ट के जो अचीवमेंट्स और फेलियर्स हैं हमें उनको फोकस करना चाहिए. अब उससे क्या होगा, वॉट एवर द अचीवमेंट्स आर देयर वी विल बी एबल टू फॉलो द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ आवर ओन कंट्री. और जो भी फेलियर्स हैं उनको हम रिमूव करके अपना आगे एक नया प्रोसीजर, जो गलतियां उन्होंने की हैं उनको रिमूव करके स्टार्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम द वेस्ट अचीवमेंट एंड द फेलियर्स. देन द विल ऑफ द पीपल. अब ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें लोगों की इच्छा, डिज़ायर, व्हाट इंडियन वांट्स फॉर द कंट्री, इंडिया का सिटीजन इंडिया के लिए क्या चाहता है, वो डिज़ायर उसमें इन्वॉल्व हो. इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो बनाई गई अंडर लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में फर्स्ट इंटरिम जो गवर्नमेंट थी इट वॉज मेड. So they were having the ideas with them. Now the work of making constitution was going on. Then the Constituent Assembly should state the ambitions of freedom fighters. अब Constituent Assembly को क्या करना चाहिए, जो फ्रीडम फाइटर्स की बात है, जो वो चाहते थे, जिस कंट्री के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्री दे वांटेड टू मेक इंडिया, उनको मानकर वैसा आइडियल हम अपनी रेजोल्यूशन में, अपनी टारगेट्स में, आइडियल में इन्वॉल्व करें. सो क्या कह रहे हैं हम, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड स्टेट द एम्बिशंस ऑफ फ्रीडम फाइटर. फ्रीडम फाइटर की एम्बिशंस को स्टेट करने वाली हो, बताने वाली हो, जिससे कि जो लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, दे शुड देयर आइडियाज शुड बी रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. देन और कौन कौन से आइडिया की बात करें हम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस एसोसिएटेड विद फ्रीडम स्ट्रगल इन 19th सेंचुरी. अब जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो 19th सेंचुरी में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके आइडियल्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए. इंडिया की डेमोक्रेसी की बात है तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, दे शुड इन्वॉल्व द सम potential of equality, whatever were the ideals at the time of the struggle on 19th century. Then justice should be there. These all should be associated with the freedom struggle in 19th century. ये सारी बातें जो 19th century का freedom struggle था उससे उसको कंसर्न करती हुई हूँ, उसमें जो लोगों की एस्पिरेशंस थी उनको इन्वॉल्व करती हुई हूँ. Now coming to remove about the social evils. कौन कौन सी, चाइल्ड मैरिज. देखिए that time it was known that the children should be married in the early age. So it was the effort by the social reformers and the people of the time that in the small age this the child is not able to understand about himself. They have to be self-dependent, they have to get the things easily. So for that there should be prominent age. So child marriage जो था that was opposed, and widow remarriage was motivated because in India there was the custom of being sati. सती क्या होती है कि आफ्टर द हस्बैंड ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड द लेडी नीड टू बी बर्न विद द हस्बैंड, उनके साथ जलना होता है. दिस वॉज सती. सो दिस वॉज टोटली रॉन्ग बिकॉज वेन आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ द males can remarry, the same way widows can also be remarried. So widow marriage was motivated. Vivekanand, Swami Vivekanand, the great youth leader, and his childhood name was Narendra. He started campaign for the reform of Hinduism. हिंदूज़ के रिफॉर्म के लिए उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया. अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कांग्रेस केम that Congress got 8 seats out of 11 provinces. It means Congress got the majority. So these were the political incidents which were changing on, which were going on at the time. So once again we are going to revise. Here we have discussed about the vision of constitution, what the constitution should be visualized as, कैसा लगना चाहिए, क्या ideal होने चाहिए. 13 December 1946 Nehru brought objective resolution. It defined that ideal, the constitution of free India. Then framework of constitution meeting क्या, it should be independent,
sovereign, republic, justice, equality, freedom. These ideals should be reflected in this, and it should be safeguard for minorities and depressed class, and it should learn from the West's achievement and the failure, कि West के achievement और failure से वो सीखे. देन द विल ऑफ द पीपल. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो लोगों की विल को रिप्रेजेंट करने वाला, और स्पेशली किन लोगों की जिन्होंने एज अ फ्रीडम फाइटर दे जस्ट सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री. तो क्या हो, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई अंडर लीडरशिप ऑफ नेहरू. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुड स्टेट द एम्बिशंस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, जो लोग सेक्रीफाइस हुए उनकी बात को समझने वाली, कहने वाली हो. अब डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, इनके आइडियाज़ को 19th सेंचुरी में जो स्ट्रगल हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए उससे एसोसिएट करके देखा जाए. देन चाइल्ड मैरिज, इट मीन्स सोशल इविल्स नीड टू बी रिमूव्ड. सो चाइल्ड मैरिज वाज द वन, it should be opposed, and widow remarriage should be motivated. So Vivekanand started the campaign to reform Hinduism. Hinduism की बुराई को दूर करने के लिए whatever the evils are coming in the Hindus, that should be removed. It was started by the Vivekanand, and under the Government of India Act, Congress got 11 seats out of 18. It means there was a majority of 8 seats out of 11. It states that Congress got the majority. It was the dominating party at the time. So these all are the points which are telling us about the vision of constitution, along with what desires, what wills of the people need to be taken care by the constitution makers. That all we have studied. In the next part we'll study how they have constituted committees and how the argument was going on and what other incidents happened and what other up and downs were there in making constitution, क्योंकि बहुत बड़ा constitution बन रहा है. So many problems will be occurred, and these will be solved also. So this was the topic of the day. Do revise the topic, do read from the book also, and you have to learn and read each and every point. So the question is coming of map question or source based question or picture based question, you will be easily able to answer. So that's all for the day. Do revise, do learn, and whatever notes we are sending to you, do note down in notebook. Thank you so much.